So hey guys, what's up? Welcome to this video. And so my name is Shivam and this is Aldrich. We both Hey, graduated just like a few days ago. And yeah, Aldrich, what you would like to talk about it? yeah. So yeah, as we have graduated this year itself, so pandemic is the biggest thing which has come out and be responsible to our not only responsible, has been a part of which our graduation is. So Or that has been like a biggest factor, you know, in which has changed suddenly from what we were thinking the graduation will be and has been now. So I this was nothing especially students who are here right now 2020 के बैच बोलते हैं जिसे टैग दिया जाता है I don't think कि that's completely acceptable to everyone. What do you think, like should we, like will we be affected with that? no, अरे तुझे पता है Like, एक्चुअली जो 2020 एंड 2021 ग्रेजुएशन बैच है ना, लाइक हम लोग जब yeah. बड़े होंगे ना, पीपल आर गोना से कि लाइक दीज वेर द किड्स हु ग्रेजुएटेड ड्यूरिंग द पैंडेमिक. हाँ एग्जैक्टली लाइक वो टैग टैग रहेगा हमारे साथ तो yeah, इट्स it नॉट will गोना be वैनिश एनीवेयर. all different. Like people will ask you, like, how was it during that time? Like you guys missed the, अभी I don't know. They अभी might have thought. दो तीन महीने में अभी things no, if they get normal, we हाँ. can have a like graduation ceremony in the college. Otherwise, last year तो mostly किसी का हुआ ही नहीं. Like the proper रहता है ना graduation ceremony. So like Absolutely. that was missed by a lot of people. हाँ हाँ वही वही जो जो फील होता है ना एक्चुअल ग्रेजुएशन का वो फील फिलहाल तो नहीं दिख रहा मुझे. लाइक इट्स नॉट समथिंग यू नो द वे Hmm. इट वाज सपोज टू हैव अ बहुत ही अलग है, बहुत डिफरेंट लग रहा है एंड इट्स डिफरेंट फील ही नहीं हो रहा वो जो होना Like we चाहिए are the only एक्चुअल batch में. जिनका we didn't knew that that हम्म. day when we went last to our college was our last day in college. We didn't had a clue. वो या Idea नहीं था. सडनली व्हाट आउट ऑफ वो जो 7 दिन का लगा था ना कि ये Hmm. होगा लॉकडाउन, वो 7 दिन से ऐसा लग रहा है 7 साल हो रहा है अभी फिलहाल कंटिन्यू हो रहा अरे, है 7 महीने फिर so एक साल और पता नहीं. out of the 4 years of our degree, we just spent like 2.5 in college. Yeah, two Yeah, yeah, probably 2.5 years. Two and yeah, not even like also half. अपना एक एग्जाम भी कैंसिल हुआ था. So like थोड़े बहुत benefits तो मिले. Cancel नहीं हुआ था, like Like it due to the was supposed to pandemic. be, yeah, it was supposed to be postponed but then कोई Yeah. option नहीं था and they had no plan, so out of that suddenly it came into their mind. So keeping the fact like all the internals and marks on those basis उन्होंने रखा था, but वो actually देखा जाएगा तो हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे पता है लास्ट मोमेंट तक कि Yeah. शायद से अभी होगा, अभी Yeah. एग्जाम देना पड़ेगा वापस से. पता नहीं क्या सिलेबस का कुछ अता पता नहीं था. लाइक बहुत सारी चीज अनसर्टेन थे. सो लाइक कुछ भी डिसाइडेड नहीं था हमारे लाइक फ्रॉम आवर साइड एज वेल बिकॉज दिस मैं थिंग उस केम टाइम आउट पे लाइक तो आउट मैं ऑफ नोवेयर. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि लाइक मार्च में कोविड स्टार्ट हुआ एंड आवर एग्जाम वाज इन मई और जून टिपिकली. तो या उस टाइम पे इतना पता नहीं था, बट आई वाज होपिंग कि पैंडेमिक स्टेज टिल जून और जुलाई सो दैट द एग्जाम्स गेट कैंसिल. उसके पहले अगर खत्म हुआ तो लाइक वी वुड हैव. वो फील मुझे भी आया है ना. गेस आई एम श्योर सबको वही आया था feel जब जब बिकॉज वो दैट स्टार्ट हुई थी. लाइक सेमेस्टर वाज. इट वोंट बी अ या. सीवियर थिंग कि ऐसा कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होगा कुछ. लाइक ठीक है, लाइक इट हैज कम लाइक अ नॉर्मल फ्लू की तरह आएगा और चला जाएगा. बट वो थॉट लेकर हम लोग चले थे बट देन बहुत कुछ हैज लाइक टेकन टू द पीक पॉइंट एंड हाँ, बहुत उसके कुछ बाद चेंज हुआ है यहाँ पर. मेनली पता या है क्योंकि वो जो एग्जाम था ना, दैट वाज लाइक फॉर मी पर्सनली इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट सेमेस्टर एवर आई हैड. सो लाइक अगर वो एग्जाम वैसे कौन होता से तो सब्जेक्ट लाइक से मुझे याद नहीं आ रहा सिक्स अभी. सेमेस्टर सिक्स, those like MMS, no, या that material something, मुझे नाम भी याद नहीं है. But that was very tough. yeah, tooling and all that kind of thing. Yeah, अगर got it. एग्जाम होता तो डेफिनेटली अच्छा नहीं जाता. That was for sure. मुझे सबसे ज्यादा था वो शीट बनाना, लाइक वो ड्रॉ करने में हाँ, सबसे ज्यादा, क्योंकि वो मेंटेन करना पड़ता एक साइड से दूसरे एंड तक ठीक से प्रॉपर्ली अटैच घर पे करके बना वो भी सब नहीं सकते सेटअप थे. करना. हाँ बहुत डिफिकल्ट होता है वो इसके लिए तो टेबल भी काफी है. द शीट्स यू नो ना फुल या इंपीरियल शीट बहुत बड़ा होता है. सो वो हाँ, पूरा ये भी नहीं हो पाता, फिट भी नहीं हो पाता. right.
वो तभी तो like during our second year we like had the most struggle with sheets क्योंकि तभी सारे बहुत सारे थे ना a couple of subjects drawing sheets. हाँ राइट, And मुझे अभी like भी कुछ याद है। लास्ट के 2-3 दिनों रिमेम्बर में कुछ 7-8 ड्राइंग्स करने पड़े थे सबमिशन के टाइम पे. एग्जैक्टली वही चीज में आ रहा था। जस्ट बिफोर पैंडेमिक हम लोगों को पता है, हम लोग को असाइनमेंट्स दिए थे पूरा इंपीरियल शीट्स के, पता है। और मैं ड्रॉ तू भी था शायद से, लाइक इवन यू वर देयर ऑन दिस ड्राइंग हॉल में हम लोग बैठे थे और 2-3 टेबल्स को हम लोग ने ये किया था, मर्ज किया था टू कंप्लीट इट। और वो ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट डे लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, उसके बाद से गया, ये कुछ फायदा नहीं था पूरा शीट कंप्लीट करके। और मेरा शीट अभी भी शायद से लॉकर रूम में होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी भी अगर होना होगा शायद से। गया कौन है किया कॉलेज में, नहीं गया कौन लास्ट है? मतलब उस टाइम पे. आई डोंट रिमेम्बर कि मेरा डॉक्टर मुझे पता है वहाँ पर है, बट आई एम नॉट श्योर कि अभी शीट है नहीं है क्या है। आई लॉस्ट इट, आई मेरा लॉस्ट द वो ट्रैक ऑफ इट। जो पेपर डालते थे ना वो रोल था वो गायब हाँ हो हाँ गया द है लाइक. कंटेनर या एंड इसे ही पढ़ा था अभी 1 साल हो गया अभी दिखते ही नहीं कहाँ पे गायब हो गए. भूल जा, अभी कुछ काम का नहीं है वैसे भी वो अभी खा यूज भी नहीं होने वाला वो। I used to hate the drawings, you know. मेरे लिए बहुत टफ या जाता था लाइक मुझे ड्राइंग करने में हिट नहीं था, लाइक मुझे वो सेटअप करने में बहुत डिफिकल्टी होता था, बिकॉज द पेपर्स वर यूज्ड टू बी लाइक टू बिग इनफ टू लाइक पिन देम डाउन एंड देन अटैच इट प्रॉपर्ली। उसके ऊपर उसका ध्यान रखना पड़ता है कहीं से फटा नहीं या कुछ मार्क ना हो उसके ऊपर, बिकॉज बाद में जैसे ही अगर कुछ ये होगा ना पेंसिल मार्क्स या कुछ होगा तो योर मार्क्स गेट डिडक्टेड ऑटोमेटिकली। वो भी 10 मार्क के लिए इतना पेपर पूरा बनाकर ठीक से with all the projections and all, सब वेस्ट जाता है। right. By the way, तुझे do you have any do you remember any experience where you know like कुछ ऐसा सीन करके कुछ लेक्चर या कुछ प्रैक्टिकल स्किप किया था? I remember एक बहुत मैडनेस था कि एक बार there I think so there was a like skip किया, मतलब bunk किया था एक lecture, and for that lecture I had my friend वो बहुत like जिद्दी था, like he was not supposed to like go off, like even though like he said that he will, तो मैंने उसका बैग लिया और निकल गया क्लास से मेरे बैग उसके बैग को लेकर। एंड आई थॉट लाइक ये आएगा पीछे, बट नहीं, he was very like firm and he sat down there itself. He said that he'll come back, but नहीं, he did not. So along with that thing, हाँ obviously बुरा लगा कि उसको बैठना है, बैठ जाओ, that was not an issue. मैं उसका बैग लेकर मैं गया and he did not even ask कि क्या किधर है मेरा बैग. So मैंने उसका बैग लॉकर रूम में रख दिया था, लाइक मेरे इसमें। आई थॉट लाइक चल ठीक है मिल जाएगा वापस से। देन आई फॉरगॉट अबाउट इट। मैं नीचे गया था लाइक नो द यूफोरिया स्टेज किया। देन आई रियलाइज कि लॉकर रूम बंद हो गया, मतलब टाइमिंग होता है ना लाइक अराउंड 3:45 या, तो वो लॉक कर देते हैं हम लोग। एंड ऑल ऑफ सडन लाइक वेट इसका बैग निकाला ही नहीं मैंने, एंड स्टिल लेक्चर्स आर गोइंग ऑन, ये अभी मुझे पूछ लेगा। सो आई वाज लाइक वरीड अबाउट ये लॉकर रूम कैसे लॉक हो गया, बिकॉज देयर वाज स्टिल टाइम, लाइक इट वाज अराउंड लाइक 3:15 और समथिंग लाइक दैट, एंड यूजुअली लॉकर रूम्स लाइक गेट लॉक बाय 3:45 अराउंड दैट। और हमारा लेक्चर्स अभी भी लाइक दे वर गोइंग ऑन, एंड देन आई डिसाइड लाइक आई विल गो एंड आस्क द पर्सन हु इज देयर इन चार्ज ऑफ इट। तो आफ्टर लाइक रिक्वेस्टिंग एंड ऑल दैट लाइक फाइनली मिल गया। Like मुझे पता नहीं था, or else that person had to wait for his bag for the next day, like पूरा एक दिन के बाद। So how was he sitting in the lecture? Did he had a book or something, or he was like that only? Nothing, just बोलते हैं ना sake of sitting। Like सभी के lectures में तो you know they used to give notes and all, teacher लिखने बोलते थे, so like he was just sitting like that. He was just sitting like that, बस उसे बैठा था। He's very sincere person, the person whom I'm addressing right now. Yeah. Attendance पूरा, yeah, you might know, yeah, exactly who the person is, yes. अरे हम लोग दोनों सेम बैच में थे क्या ड्यूरिंग प्रैक्टिकल साइजेस, है ना? वी वर बोथ इन द सेम बैच। या we obviously हर प्रैक्टिकल्स में सेम बैच में ही थे। यू नो लाइक स्टार्टिंग में फर्स्ट या सेकंड ईयर में
like तो क्या करते थे, we used to be like अभी लंच के बाद रहता था ना प्रैक्टिकल सेशन, so like you know अभी हम लोग का 15-20 स्टूडेंट्स का बैच है, so like we used to decide among ourselves कि like you know only 3 to 4 people will go to sir and tell him that all the rest 15 are absent, so like sir you just give You us are the revealing questions. the plans. You are giving Yeah. ideas to the new batches. Yeah, I know. ये हुआ था, बहुत बार हुआ है. Like Yeah. basically, if And we the had like teacher used something. to believe, you know, उनको लगता था okay, so they would, और you know they मतलब भाग भी नहीं जाते थे, टीचर के पास जाते थे and they used to hide and watch it from a distance. And No, like हम लोग like thing which happened is we used to go and consult with the respected teachers, and we used to tell them that give us the facts if it has not been conducted, like practically ऐसे conduct yeah, नहीं हो हम रहा, लोग like घर से it's करके not been ले लेंगे. conducted. Let's do it at home. Like anyways, you are gonna get the. We have to just submit it, हम्म. and then why should we just wait for like entire 3.5 तभी hours? अगर सच में We वो can just प्रैक्टिकल complete the work कैंसिल and हुआ give ना, it. क्या इफ Hmm. तभी प्रैक्टिकल कैंसिल होता था भाई, अलग लेवल की खुशी होती थी, लाइक दैट हाँ, exactly. हैप्पीनेस ऑफ गोइंग होम 2 hours अर्ली देन द रेस्ट Earlier, ऑफ द स्टूडेंट्स yeah, वाज लाइक ग्रेट. compared to everyone else. या Exactly. The happiness used to be in some extreme way. But ऐसा कभी हुआ है कि you have bunked the like बट वो classes or तभी you have सिर्फ skipped the classes वो उन्हीं सब्जेक्ट के and करते थे मेनली हम लोग, जिनका मेनली कुछ ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं था, लाइक जो फिर ओनली हम लोग वी कैन डू इट थियोरेटिकली, लाइक जो no no सब्जेक्ट no में no. एक्सपेरिमेंट्स लगते थे, लाइक वी यूज्ड टू अटेंड देम, यू नो वी यूज्ड टू फिनिश देम लाइक Huh. एज अ Yeah, रिव्यू. exactly. Yeah, yeah. The ones which were required to perform the experiments, या we set and we completed that. The ones which are just theoretical and had no क्योंकि concept in वो फिर between, like in it, वैसे सब्जेक्ट में we अलाउ भी नहीं just करते. wrote them down and we just finished it with that. So that's what my question is. Like, what have you done if when you skip the practicals? Like, जब नहीं बैठते थे, क्या किया उस टाइम पे? घर पे क्या करेंगे, घर पे exactly same. Like, like you अगर should मुझे not be caught skip in भी the करना college, no? था. If any other teacher sees you, he will like your practicals are, what are you doing here, like वो सीन नहीं होना चाहिए, like My case used to be different. I used to call directly my mom and tell that I'm not sitting for the lecture. And मैं सीधा घर पे आता था. It doesn't matter. क्या फर्क पड़ता है? Like you're anyways giving your time somewhere or the else. So utilize it rather go than just anywhere wasting but it. just don't roam in the college, that's it. Take नहीं us ऐसा भी नहीं like था. yeah. I तो used to even like sit near the principal's office, outside principal's office. I used to just read books or something. हाँ? Or I used to अबे go तो to लाइब्रेरी में library. जाना Yeah. था. हाँ हाँ लाइब्रेरी में भी जाता था मैं. Either when see some of the lectures used to be like to after sitting for like continuously for like lecture हम्म. your mind gets like हम्म. anyway you can't concentrate on so many lectures for hours. So हम्म. I used to take breaks in between, like not particularly first 2 years I did not like skip much of lectures. Like if even if I skipped those lectures I was like had some intention like motivation to like complete either of our work ना assignments का, तो उसके लिए मैं skip करता था. Or else there was no just for fun or anything, there was nothing like that. But now like when I reached out to the third year I realized that it's of no use. Like even if you sit or you don't sit, it's not gonna make a big difference. You are Yeah, yeah. anyways at the end जब पढ़ना हो तो हम खुद से ही पढ़ना होता है. ये Yeah, सबको मानना पड़ेगा. yeah, that's true. Even from the scratch, some topics will require to have a prior understanding with वो the एक yeah, drawings और सब चीज के लिए. that thing we got a great advantage during due to the online lectures in the last 2 years. Yeah, right. Like we used to be, जैसा बैठना था वैसा बैठ सकते थे, जैसा ध्यान देना था वैसा दे हाँ, सकते थे. इमेजिन अभी अभी कोई बोलेगा तू अपने घर पे नहीं है ठीक से बैठ करके, पर अभी शायद से वो चेंज हो जाएगा So, you टॉपिक, know, some लाइक द like स्टेटमेंट. a lot of schools require to have your camera and I guess camera on during the entire lecture. I guess schools में वगैरह होता है वो. हाँ हाँ So होता like है, like वो some time पे होता है. everyone has to keep it on. But That is an you important can't, you thing. know, online lectures you can't sustain yourself for a long time क्योंकि अभी like we had a semester ना, I guess we had only we had one semester online, so maximum it was 3 months of lectures, right? So I was like done after 1 month, you know. You can't sit for so long on a online device. It's just not, I think, that much. You irritate हो It जाएगा. it You is not won't be able to easy. focus.
Absolutely, it is not easy to sit for like Hmm. from 8:45 a.m. till Hmm. 4:30, 4 p.m. No, no. So your mind definitely gets saturated. Like Yeah, even the the periods, the breaks which you used to get in between were hmm. not enough. Yeah, But that's what like things have taken place right now. It's been going on the same way. But what I think is this pandemic has changed it and has given like a good comfort at your own home and like अपने घर में बैठ के ठीक से अच्छी तरह से सुन सकते हो. You can like concentrate according to yourself if you some way. Okay, but ये graduate जो हुआ है हम लोग, it has taken a really nice and some other way of feeling it like नए एग्जाम्स के पैटर्न्स चेंज हो गए. जैसे हम लोग hmm. को ऑनलाइन लिखना पड़ता था पहले 80 मार्क्स के पेपर्स के, लाइक इट हैज़ बीन चेंज्ड. So Hmm. now since the the mode of like conducting exam is different, I feel it has been given an advantage to the students. Like I felt like it was good because you have time to even revise it, you have time to even give exams and ठीक था. बट It's अगर like ये सेम चीज yeah. अगर हाँ हाँ बोलो. या दैट्स व्हाट आई सेड लाइक It's अगर like ये सेम चीज अगर अभी हाँ. हाँ या कंटिन्यू कंटिन्यू It's जस्ट like a कंटिन्यू. blessing in disguise. This pandemic has been true सेम for us. बहुत एग्जैक्टली सारे दैट्स ट्रू. advantages भी थे, बहुत सारे disadvantages भी थे. So like they kind of balance themselves as well. हाँ So like राइट एग्जैक्टली. uh, सो सपोज जिनके पास लाइक दोज हु आर एबल, लाइक मैंने देखा है बहुत लोगों के पास कोप अप करने में टाइम हो रहा था कि सम ऑफ देम हैड इश्यूज. मैंने यूटीज में देखा था सम पीपल हैड इश्यूज विद लाइक यू नो like uploading the PDFs and all that thing. So the good thing was teachers were cooperative, like इतने टाइम के भी खत्म हो रहा था. पर मुझे यूटीज थोड़े लेंदी लगे थे जब लिखना पड़ा. बट उसके बाद वो एक चीज था कि इट केम आउट एज एन हैंडी, लाइक हमें लाइक वो पता चला कि हम लोग क्या लिखा है. सो इवन इफ वी नो कि एग्जाम के बाद अगर कितने मार्क्स आते हैं तो हम लोग वो क्रॉस चेक उसी टाइम पे कर hmm, yeah. पाए. सो ये चीज एज आई सेड लाइक ये हमारे पास जो टैग है लाइक वी somehow have to make change in this like 2021 की बैच को. एंड probably हम लोग like we will be remembered by people for always. हाँ But वो तो है. वो वो चीज को निकालना है. Like we don't want that thing to be like as a a mark. So So that's like officially हम लोग का अभी we got done with college, but practically तो 1.5 साल पहले हो गया था. we है oh ना? तो तभी term that took a termination of the college, like the college life. हाँ. तो Like कितनी बार कॉलेज the गए college तब life तब got बता. ended. uh, I think I just went like thrice, Right just ना? like yeah, for that thing like mark sheets and all that stuff like also. I Yeah, also so went वो like that twice. Yeah, I went twice. हम्म. मैं लाइब्रेरी गया था देखने के लिए. बट देन हाँ. लाइक थिंग्स वर लाइक कि मुझे रिटर्न भी करना था मेरे बुक्स. एंड सेकेंडली लाइक आई वाज जस्ट चेकिंग ऑन लाइक all whatever like necessary things were there or not, like Hmm. if I could. So other than that I was like college बहुत खाली खाली लग रहा था. I didn't feel like when I checked out a class as well, like it was closed, no one was there. Hmm. So you know वो बहुत डिफरेंस bench है. and all सब चीज का like, you eagerly wait that you could meet again and you could have that same your हाँ. routine and you could carry on that no, things have changed. The new era like has I begun, guess next something year से वापस adaptation. normal हो जाएगा. I guess. Is like college is Hopefully. starting from July or August? No, ना? I don't know, but मैंने देखा कि स्कूल स्टार्ट हो रहा है. I guess Oh. somewhere I heard that they are like, going to reopen the schools by August. Yeah, अभी भी it's like very unpredictable. Yeah, it is. It is unpredictable. We don't know कि अगर start हो या ना हो. Hmm. Like That's it will be like from I guess next year so there it will be like fine. I think hardly और 6 महीना more. उसके I don't think it will be more than that.
Nay, see, like right now, I'm not taking any calls on what हाँ राइट predictions वो can भी है. do. Like चीजें के बारे में सिर्फ सोच सकते हैं एंड बट जब बोलना हो तो हम लोग नहीं बोल सकते बिकॉज वी डोंट हैव दोस वर्ड्स वी कांट गारंटी एनी It's वर्ड very, व्हिच वी you know, कुछ भी हो सकता है like at any moment. राइट दैट्स It's very unpredictable. it's unpredictable, right? The times are not something in our hand and we can just go with it. That's it. So, you know, Hmm. अभी जो Clubhouse आया है, I just got an idea. Like we were discussing about it. So Clubhouse, if they start like you know in a form of education there, like if a teacher starts a room based on a Mhm. topic and gives lecture and the students can join there. Mhm. So what do you think, that can be possible in an education I don't format? think so. That's not a good idea as for what I think, because see, You can create you private can rooms. yeah that is right. You can create private rooms, but that won't be a good agenda. Which I think people Yeah, यहाँ will present नहीं follow. कर सकते उस पे. Exactly, वो ठीक से प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं एंड Only audio. एक सिर्फ ऑडियो के हिसाब से आई डोंट थिंक सो पीपल लाइक टीचर्स विल बी एबल टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन एनी ऑफ द स्टूडेंट्स. You know, Hmm. stories के लिए अच्छे हैं. If you're like gonna have a storytelling and all that, you can use Clubhouse. But other than that, if things are that, like अगर मैथ्स वो सब सिखाने तो कहाँ पर Clubhouse पे बैठ के सिखाने वाले orally. Right, वो तो है. Yeah. But do you think like after the post pandemic, will Clubhouse be popular then as well? I think it may carry the same way what it's going right now. Difference hoga, definitely there'll be a difference in Hmm. why people are being there. But you know, it's said if you have an attachment to something, you just have it till a very long time, like Hmm. in your future as well. Uh, Probably what you know the platform is giving out a lot to people, like some people like who are introvert are like able to like speak out to say their opinions without even showing their face, you know. ये सेम तरीका एज आई सेड यू नो प्रीवियसली हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जैसे यूट्यूब पे हर चीज प्लेटफॉर्म से हम लोग कमेंट करते हैं उसी चीज को हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं क्लब हाउस पे. या कमेंटिंग या पुटिंग आउट योर ओपिनियंस योर, but that has been heard instantly by people there itself, and not only a one or two people, but a very a nice amount of people, like a good number. So Hmm. that becomes a flow कि मतलब वो instantly एक flow में एक conversation में बदल जाता है. So yeah, that's a good way I to think from carry it. a psychological point of view, Clubhouse is, you know, why it is because, you know, right now You and your people are getting, psychology yeah, never yeah. ends. The Yeah. people are like, you know, many people are lonely right now, or Mhm. if they cannot go out, they can just, you know, have a virtual feel of like having a lot of people around them having Mhm. discussions through that. So like That's right. indirectly they get a feeling that they are, you know, like among people in their room by alone as well. So due to that perspective also, people are, if they are getting addicted, that might be the reason as well. You know, they just want the feel of having people around them, so they can achieve it through that. And you know, it's live as well, so like they can get more connected, you know, like from recorded content versus live content. People get Mhm. more connected in live content because like, you know, it's happening right now. I'm seeing it live, so like it creates more Yeah. connection as well. Like that Right. We also can might be a interact case. with people at that point itself. Yeah. So, Yeah. so that's an advantage over there. So Hmm. yeah, basically that everything has its own pros and cons. So we know जितने इसके अच्छे साइड थे, Hmm. hopefully it will be seen or not be seen, but will be found out someone by someone or the others. Uh, I and think Clubhouse cannot speakingly, be abused. Clubhouse cannot be abused like, you know, Instagram or TikTok. mhm. Like it can be kept like sane. I think it Yeah, can't be yeah, abused yeah. or made toxic because it doesn't have any more features than audio. I think that. Features in sense like uh, even if the person like the person who has developed it, like the app, will not consider or should not consider this because rather
no, the uniqueness of Clubhouse will be Hmm. like it will no longer be the purpose of like Hmm. giving out. Like जहाँ पर से opinions होंगे वहाँ पर कुछ और extra अगर add किया जाएगा तो yeah, Hmm. that will be lost somewhere on the end. इसके. Yeah. Hmm. Right. So what basically this pandemic has been giving you like let's say अभी फिलहाल लोग अपने times को use कर रहे हैं ठीक से like Hmm. graduation होने के बाद एक particular time मिलता है. So what are you trying to like bring out from yourself? Either some way like skilling up yourself, or you know, अभी तो having changes yeah. in your routine. I was like, I didn't do anything for a month, in the April, I guess, क्योंकि like बाहर की situation ही वैसी हो गई थी. I was not in the mental space to do anything. So I just chilled. And उसके पहले तो internship was going on, so तभी ज्यादा and yeah, skills तो क्या चालू रहते ही है like, but right now it's like even if we have more time, we are having less productivity. वो मैं अभी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर रहा हूँ. Like पहले in less time we used to do more work. Like right now we have the whole day. We don't have to go anywhere. We are just sitting at home. But then too, as we are not getting enough recreation like through any sources. So like to screen देख के कितना देखेगा एक point के बाद तो it gets frustrating. How many series will you watch on Netflix? After a time Exactly. it is Yeah. no more fun. So like even if you work for 3 hours, let's say, so what will you do in your free time? If you don't have any good thing to do in your free time, you can't again focus for the next 3 hours. So I guess that's the thing which is like lowering the productivity, I guess. थोड़ा बहुत open up हो गया, then I guess things will be fine. I think so. Nice. That's nice. क्योंकि At अगर least if you work intensely and then उस level का ही तू मजा करेगा, then you will even enjoy working harder next time. Otherwise you will not. I agree to Yeah, that. depends, but mainly yeah. Yeah, exactly. So that's what productivity will depend upon how you keep yourself, like how busy you keep yourself. So Yeah. even फिलहाल तो like there have been like दिख रहा है कि लोगों के लाइफ में चेंजेस है अभी फिलहाल. डिफरेंट जो टाइम पहले था किसी ना किसी टास्क पर चला जाता था, नाउ इट हैज बीन लाइक यू हैव लॉट मोर टाइम टू लेफ्ट आउट. So productivity has changed, but we can still keep on doing a lot of things. We can keep on adding a half task on a list. Like if you do this tomorrow, so better it will help people to acknowledge what you have right now. Like ये time बहुत useful तरीके से हम लोग use कर सकते हैं. uh, हाँ, so moreover our topic for the podcast was like I'm just waiting कि कब how things open up and at least malls open up, so वहाँ पे जाके like you can just chill. The malls and theaters once they open up. I'm eagerly waiting as well. Like we could see if we could when we could meet and when Yeah. just have we could chill around. So अभी मिलके एक that's बनाते podcast. हाँ मिलके बना देते हैं. We'll have a get together with everyone from our college. Whosoever want to Oh yeah. yeah, join in, they can. Yeah. So yeah, that's one. So Let's wrap this up. So guys, yeah, let's keep it yeah, up and uh yes, carry. क्या कुछ कहना है? I would Want to say like it conclude? was a fun session. Like we did not have anything in our mind. It was completely raw what came out from here. Let's And see it if will we be raw could every bring out time. some topic. Yeah, it is going to be. We are not going to decide anything what we have or no content in pre-hand or No scripting or manipulated anything. scripts to Exactly. जो involve बोलना है the दिमाग mind. से बोल दो at the point Yeah. at the same thing which comes out. We will And talk on a I human think this will level. be more psychology, which is Shivan's favorite subject. So like he will go accordingly to that. So yeah, we are going to bring out all possible ways how we could bring like, in order to just speak and chill in this podcast session, and Yeah. hopefully we'll see other people joining as well if possible, bring out guests and
connect with And them do as check well. out the This links is in the only description. meant for Do that. check out the links in the description. अगर हम लोग ने कुछ Instagram वगैरह इसका बनाया है, so like we'll put the links down there, and we'll hope to see you in the next episode, next video or Yeah. whatever. Okay. If you like चलो. this podcast, do like Bye. it. Like, If you comment, want to subscribe, share it all with that others, generic promotions. yeah, generous. Yeah. Being generous is very much important. So let's just wrap up this. Like करना है तो Thanks, करो, नहीं किया तो भी everyone. चलेगा. No forcing. If you genuinely like. Otherwise don't. Exactly. Yeah, that's what is necessary. So let's Yeah. just finish it up. Nikal it, Abhi. Chal. Well, bye. Have a Yeah, good bye, day bye. or good night, whatever time you are watching this. And we'll see you in the next video. Okay, next video. Bye. That's a very long ending. So, ठीक है. Tada, bye, bye. Yeah. Bye.